लव मैरिज हुई थी और 6 months into the marriage she was diagnosed with breast cancer and unfortunately uh, the husband left her. He brought her over to the mother's place and said, I'm sorry, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता, आप प्लीज आपकी बेटी अब आपके पास। तो एक औरत के लिए अगर एक ब्रेस्ट रिमूवल के फेज से वो गुजर रही है, सो वही उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, बिकॉज दिस वुमन इज लूजिंग अ पार्ट ऑफ हर फेमिनिटी। देयर फैमिलीज थॉट्स के ओह ये तो मरी जाएगी तो क्या फायदा इलाज करवाने का, नंबर 1। नंबर 2, देयर लाइक ऐसी कोई चीज नहीं है, डॉक्टर सिर्फ पैसे बना रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की लंबी चौड़ी बातें करते थे। चलो एक काम करते हैं, हकीम को दिखा देते हैं, होम्योपैथिक को दिखा देते हैं, वो फलाना बाबा है उससे जाके दम करा लेते हैं, उधर जाके ये वाला पानी ले लेते हैं पड़ा हुआ, यू नो दीस टाइप ऑफ थिंग्स। I'm going to take you through this journey of a patient जिसको पहली दफा पता चल रहा है कि उसको कैंसर है। So the doctor always told the patient या asked the patient, आपके साथ कोई फैमिली वाले आए हैं? और मुझे थोड़ा सा ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि जी, बिकॉज मे बी मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आई हैव नेवर गॉन विद एनीवन, मैं हमेशा अकेली जाती थी। सो एनीवेज एंड आई आस्क्ड हर, मैंने कहा डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट के ऑफ कोर्स के why do you want to talk to the family first, why not the patient? And she said nahi, this is a different mindset. Number 1, you have to understand these are women जो exposed नहीं है बहुत सारी certain challenges in life. They run a very routine, for them a very normalized housewife, homemaker, आराम से नौकरी करने वाली खवातीन, कोई बहुत हाई फाई एलीट और इस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आ रही है, इनमें से बहुत ज्यादा कोई एजुकेटेड भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल देयर फैमिलीज फर्स्ट, और फैमिलीज ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को बताना है नहीं बताना है। तो ये यू नो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर मी, एटलीस्ट इट वाज, कि काफी सारे पेशेंट्स की फैमिलीज को पता ही नहीं होता है कि उनको कैंसर है। इट्स ओनली ऑब्वियसली कोई बेवकूफी होगा जो बार बार एक क्लिनिक में वॉक इन कर रहा है जहाँ सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं और प्रिटेंड किया जा रहा है कि जी हमें इसको नहीं बताना है, फैमिली वाले प्रिटेंड करें। आई थिंक दैट्स अ लिटिल नाइव, क्योंकि अगर वो बार बार एक ही क्लिनिक में आ रही है जहाँ पे एक ही तरह के पेशेंट्स हैं, तो यस नेचुरली यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैंसर, इफ नॉट कैंसर, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन फर्स्ट टाइम, तो एक ये सिचुएशन को ध्यान में रखें कि एक पेशेंट को पहली दफा पता चल रहा है और उसकी फैमिली उसको न्यूज कैसे ब्रेक कर रही है, और बहुत सारी चीजें जिनको मैं यूजुअली कहती हूँ एक मेंटल जिम्नास्टिक चलना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल हेल्थ कि जी मेरी हेल्थ के साथ क्या होगा, बट देर आर सो मेनी अदर फीलिंग्स एंड इमोशंस जो आपके साथ आने शुरू हो जाते हैं। ये याद रखें, फॉर अ वुमन स्पेशली इफ डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, द मोस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दैट डॉक्टर्स विल ऑप्ट फॉर, एंड ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स फील करते हैं फुल प्रूफ होता है, इज रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। सो एक औरत के लिए अगर एक ब्रेस्ट रिमूवल के फेज से वो गुजर रही है, सो वही उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, बिकॉज दिस वुमन इज लूजिंग अ पार्ट ऑफ हर फेमिनिटी, नंबर 1। सो सबसे पहला थॉट, आई एम गोइंग टू लूज आई डाई, आई विल लूज अ ब्रेस्ट। और अगर मैं कीमोथेरेपी करवाती हूँ, विच मीन वो जो ड्रग्स होते हैं जो इंड्यूस किए जाते हैं टू सर्कुलेट इन द ब्लड, जस्ट टू मेक श्योर कि ब्लड में कहीं और तो कैंसर सेल्स जाके कहीं और नहीं अपने आप को प्लांट करते हैं। कीमोथेरेपी की वजह से द बिगेस्ट शॉक अ वुमन गेट्स बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी इज हेयर लॉस, टोटली बॉल्ड। सो देर आर दीज feelings of being very very upset, not only for the person, the woman, but also for the family. बट मैं सबसे पहले ये बता दूं, यहाँ जितने भी लोग लॉग्ड इन है या बाद में इसको रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, वट एवर, दीज फीलिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। एवरीबडी डायग्नोस्ड विद एनीथिंग बैड विल अंडरगो दीज फीलिंग्स, और ये फीलिंग सिर्फ उस पेशेंट की नहीं है, ये फीलिंग्स उसकी फैमिली के साथ भी होंगी, ये फीलिंग्स उसके फ्रेंड्स के साथ भी होंगी जिनको पता चलेगा। सो प्लीज
These feelings are absolutely normal. हम human beings हैं, हमारे अंदर ये feelings होंगी, and they're absolutely normal. Uh, so when we are juggling with accepting or with trying to come to terms with the fact that we have been diagnosed with cancer, what happens? There's physiological stress, there's a psychological stress, there are your thoughts, and then there are a matter of finances. Not everybody is lucky enough uh, to have the affordability. Cancer treatment is considered among one of the most expensive treatments in the world. So there is a cost of the surgery. Usual protocol होता है, surgery होती है जिसमें breast removal होता है, lumpectomy होती है या mastectomy होती है, एक part निकाला जाता है, या अगर कैंसर फैलने का खतरा डॉक्टर्स को होता है और अगर नोड्स होते हैं तो पूरा नोड्स निकाली जाती है अंडर आर्म्स के एरिया से भी. Obviously, a doctor will be able to talk about this more than I can. I'm only telling you what I kept hearing or what I kept listening to during my research. So there's a cost of a surgery. अच्छा, सर्जरी के साथ एक कॉस्ट ये भी होती है कि सर्जरी के फौरन साथ कीमोथेरेपी शुरू नहीं हो जाती है या रेडिएशन शुरू नहीं हो जाती है, रेडियोथेरेपी विच इज अ मोर लोकलाइज ट्रीटमेंट. ये फौरन एक साथ नहीं शुरू होते, कुछ टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा पेशेंट को रिकवरी के लिए. Not just physical recovery, also mental recovery. क्योंकि the patient has just gotten a very important part of her body removed. She's already very uncomfortable. She's upset. She's angry, and so the second stage of treatment, which is either the radiation therapy or the chemotherapy, has to be given time so that the patient is physically and mentally up to take in the treatment. और याद रखें, कोई सा भी बीमारी है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है या आपके अंदर अगर विल पावर नहीं है उस बीमारी को हैंडल करने का, द ट्रीटमेंट जस्ट डिलेज. आई एम नॉट सेइंग कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता, बट ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है और बहुत डिले हो जाती है. ठीक है. सो फिजियोलॉजिकली the type of things people start thinking is they get suicidal thoughts. You're not going to believe this. जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो कुछ खवातीन, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस उस ओपीडी में जाती थी, तो आई हैड एक्सपेक्टेड कि मुझे वापस नजर आएंगी. Some people never came back, and at times you start wondering why didn't they come back. And I asked the doctor about it. कि I ran into these few women इस हफ्ते या उस दिन और इस नाम की कोई खातून थी, because I was making notes. I was obviously doctor didn't remember all those names क्योंकि उनके पास इतने patients आते थे. And then we figured out, and she did mention this also, okay, at times people don't come back, and it's not that they don't come back because they don't want to get treated, and there is a reason that they don't want to get treated. Number one, they can't afford it. और हमेशा ये रिसर्च भी आपको बताती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च है कि जब किसी भी एक फैमिली में एक औरत बीमार होती है, सो शी विल पुट डाउन हर बीमारी एज द लीस्ट प्रायोरिटी. बुखार होगा, जुकाम होगा, वी एज इवन वेरी एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड वुमेन, हाफ ऑफ द टाइम वी जस्ट पॉप अप पैनाडोल, कफ सिरप ले लेंगे, एंटी एलर्जी कोई सा एंटीहिस्टामिन खा लेंगे, वी विल कॉल अप अ फ्रेंड जो कि डॉक्टर है और उससे पूछ लेंगे. हम एज वुमेन वी डू नॉट प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ, और हमारे लिए ये होता है कि यार काम चल जाएगा ना, आई एम गोइंग टू गेट वेल. इमोशनली भी वे कंपैरेटिवली स्ट्रांग, सो फिजिकली भी थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं फिर हम. और हमें ये होता है कि ओ माय गॉड, अभी डॉक्टर के पास जाना है, 3,500 रुपए कंसल्टेशन चार्ज आ जाएंगे. उस 3,500 रुपए में आई कुड डू सो मेनी अदर थिंग्स. दवाइयों का खर्चा हो जाएगा, आई विल बी डाउन. मैं डाउन हो गई तो घर कौन देखेगा? Who's going to look after the cooks? Who's going to look after picking and dropping the kids to school? Who's going to take them to tuition? Who's going to take them to the swimming lessons? Whatever. It's very convenient that for married women, that once we get married, we are not only looking after our house and our families and our parents, we're also looking after the parents of our husbands. हमारे spouses बहुत conveniently अपने पूरे खानदान को हम पे dump कर देते हैं. So for us, for a woman to be unwell or ill, people need to understand that एक औरत के बीमार होने से आपका पूरा चीज डिरेल हो जाती है, आपका सिस्टम डिरेल हो जाता है.
Okay, so a woman's health is a major priority, and we as women need to prioritize it ताकि दूसरे लोगों को इसका एहसास हो. So these women, coming back to the discussion on what used to happen there, they would never come back. One, because their families thought के oh ये तो मरी जाएगी तो क्या फायदा इलाज करवाने का. Number one. Number two, they're like ऐसी कोई चीज नहीं है, डॉक्टर सिर्फ पैसे बना रहे होते हैं इसलिए इस तरह की लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं. चलो एक काम करते हैं, हकीम को दिखा देते हैं, होम्योपैथिक को दिखा देते हैं, वो फलाना बाबा है उससे जाके दम करा लेते हैं, उधर जाके ये वाला पानी ले लेते हैं पड़ा हुआ, these type of things. There's a lot of women who go into alternative medicine, and they go into alternative medicine because that's what their families are sort of taking them to. So it's not just, these are the different stresses and these are the different phases that woman is going through, right? Then she's like, the treatment won't work, or if the treatment is going to work, trade-off क्या है? क्या मैं इतने pain में होंगी? Can I take so much pain? Do I want to take so much pain? Might as well die. Okay. Then, okay. So if I'm going to take this treatment, and what if the cancer comes back? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का. ये मैंने खुद सुना है लोगों को डॉक्टर से पूछते हुए कि अच्छा ये वाला कैंसर तो आप समझती हैं एलिमिनेट हो गया है. Can it recur? Can it happen in the other breast? Or if I don't have breast cancer, can I have another type of a cancer? These are very common questions that people will ask. Secondly, women start feeling, and not just feeling, but ये definite है कि you start not just losing out on your hair, not only losing out on your body part. जब कीमोथेरेपी आपको एडमिनिस्टर होती है तो पिगमेंटेशन आउट हो जाता है, तो यू लूज आउट ऑन योर कलर, यू बिकम डार्क. इनफैक्ट ये नेल्स के अंदर भी मैंने देखा है लोगों के लगता है काली वाली मेहंदी लगा रही हुई है ना, the nails go all dark because the pigmentation is out. Women start having these thoughts कि I'm going to become ugly, I'm going to become disfigured, I'm going to become fat, I'm going to get thin, I don't know, okay. Then there is chances that you will not be able to work if you're a working woman, and you're going to think about going back to work. Then there is not just the cost of the surgery, there's the cost of medication, and there is the cost of radiation. Radiation single shots में administer होता है, daily basis पे administer होता है, बड़ा localized rays होती हैं उनके through जो है उस areas को, उस एरिया को अटैक किया जाता है. इट्स लोकलाइज्ड. अगर आपका कैंसर एक ही जगह पे डॉक्टर जो है फिगर आउट कर लेते हैं कि इट इज लोकलाइज्ड, इट्स नॉट इन द ब्लड स्ट्रीम नाउ, सो दे विल एडमिनिस्टर रेडिएशन. और रेडिएशन का अपना एक कॉस्ट होता है. नॉट अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, एटलीस्ट आई नो इन कराची, नॉट अ लॉट ऑफ वेदर प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स आर डूइंग इट, सो दे आर एक्सपेंसिव. फिर सर्जरी और उनके साथ साथ जो आपके टेस्ट हो रहे होते हैं बार बार, सो एवरी टाइम एक कीमोथेरेपी साइकिल्स में होती है. So if you have a chemotherapy today and you're supposed to have the next one next week या 2 weeks later, उससे पहले डॉक्टर आपके टेस्ट करवाते हैं just to see कि आपके blood cells और red blood cells किस लेवल पे. So if your blood cells are not making up to a particular level, your chemotherapy is not administered, they need you to be recovered to a point कि जहाँ chemotherapy हो सके. उसके बाद फिजियोलॉजिकल बड़े आपके साथ मसले होने शुरू हो जाते हैं. पेन्स, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, आई टोल्ड यू अबाउट द कलर आउट. पेन्स बहुत होते हैं सर्जरी के, अपने और पोस्ट सर्जरी पेन्स बहुत होते हैं. माउथ ड्राई होता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकता है. एट टाइम्स मेडिसिन की वजह से किडनीज इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तो ब्लैडर का मसला हो जाता है. इफ यू आर लैक्टेटिंग, you're a feeding mom, वो आपको मसले होने शुरू हो जाते हैं. यू डोंट हैव वन ब्रेस्ट, सो ऑब्वियसली वहां से तो फीडिंग का सवाल ही नहीं होता है. बट then there might be a loss of milk if you're lactating, if you're feeding a baby. So all of these things are a major concern, और constantly families और patients के mind में ये mental gymnastics हो रही होती है. What are the type of feelings that a patient or a family, a patient mainly goes through? The patient is overwhelmed. Overwhelmed किस तरह से है? Look at a normal middle-aged woman who's married, has family, lives in a joint family, जो कि एक typical पाकिस्तानी family structure होता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ.
So she has so many other things happening in her life. If she's working someplace, then she has children she has to look after. She's got siblings. She's got her spouse. She's probably has in-laws. She has her own colleagues, or even if she's not working, she has families to look after, her own parents and everything, right? So there are so many things happening in her life. So if there are children, then she's looking at their school, their homework, their tuitions. She's looking at parent teacher meetings. And then she has to decide what has to be cooked. She's got to decide कि धोबी को कपड़े कब देने हैं, when is the laundry due. She's got to decide कि bills payments होती हैं, and she's got to get groceries. So uh, there are so many things. Women are great at multitasking, by the way. So we as women, when we multitask, obviously we've got so much running in our heads that we get overwhelmed by this new piece of information, which directly is impacting us and our health. And we're like, my God, अगर मैं कैंसर ट्रीटमेंट में पड़ गई तो ये सारे काम कौन करेगा, कौन देखेगा, राइट? Then I start getting angry. Angry क्यों? Because in our culture, women are not supposed to be very expressive about their feelings and emotions, right? And there are very few people that you can talk to. So the more this is bottled up inside of you, the angrier you get, because you don't know किससे जाके क्या बात करनी है, right? And you don't know अगले आपकी बात को किस तरह समझेंगे या किस तरह सुनेंगे. Then there is a fear and there is a worry. Fear किस चीज का है? Oh my God. Um, the let's say I do start my treatment, and although my and if I'm lucky, I have insurance out of my own company where I work, or my husband's company is supporting insurance, medical insurance for the spouse. But companies में भी याद रखें, HR structures ऐसे होते हैं कि not every company is fully funding a treatment. It also depends on the grade that you're working on, और किस लेवल पे कितना ट्रीटमेंट है, इन पेशेंट कितना है, ओपीडीज कितना है. तो वो एक अलग एक डिफरेंट किस्म का एक फॉर्मूला होता है जो हर कंपनी का होता है. But let us say you don't have insurance and you want to pay, you've got to pay out of your own pocket. So you're worried about कि uh, the more I live, the poorer I'm going to get. इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा. Then there is stress and there's a lot of anxiety. How will I cope up? Who's going to be looking after me? आज तक तो मैंने सबका ख्याल रखा है, मेरा ख्याल कौन रखेगा? And no, मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता. मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं. My husband has to do a job. मेरे भाई बहन तो खुद अपने कामों में हैं. They're married. They have their families. My parents are old. My in-laws cannot. All of these type of stress and worry. ठीक है? When I was working with or researching with these ladies, I asked them. मैंने कहा, अच्छा ये बताएं, how do you spend a day? These are women who are already undergoing treatment, right? वो अपने OPD follow-up visits के लिए डॉक्टर के पास आ रही हैं. And one of them said कि मैं नमाज और कुरान शरीफ और मैं इबादत में बहुत टाइम लगाती हूँ. मैं इतनी तस्बीहां पढ़ लेती हूँ, मेरे पास दाने रखे हुए, तो मैं ये वजीफा कर लेती हूँ. वो तो I asked her, मैंने कहा ओके, बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेट करती हैं और आप आप इबादत भी करते हैं, आप और क्या करती हैं? तो शी इज लाइक, और मैं क्या कर सकती हूँ? सो आई फेल्ट रियली सैड लिसनिंग टू हर कि कितना अपने आप को हेल्पलेस फील करें. मैंने कहा अच्छा चले, मुझे ये बताएं, जब तक ये नहीं हुआ था आप क्या करती थी? शी सेड ओ, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग. मैं खाना पकाती थी और मेरे हाथ की बिरयानी जो है वो तो मोहल्ले के कोने वाले घर तक उसकी खुशबू जाती थी और लोग इतना एंजॉय करते थे. और मुझसे फरमाइशें आती थी मेरे पास कि भाभी आप अगर बिरयानी बना रही है तो हमारे घर जरूर भेजिएगा. दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एंड सो आई सेड के तो अब आप ये सब क्यों कुछ नहीं कर रहे? तो शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है, मुझसे चला फिरा ज्यादा नहीं जाता है, और मैं तो अब एंड शी सेड ये तुम मेरा हाथ देखो, जहाँ पे उनकी सर्जरी हुई थी जिस वाले पोर्शन में, उनको वहां पे एक सिचुएशन कुछ पेशेंट्स को डेवलप हो जाती है जिसको मैं डीमास कहते हैं, स्वेलिंग. उनके हाथ इतने ज्यादा स्वोलन थे, उन्होंने पूरी अपना अबाया पहना हुआ था, लूज स्लीव वाला. व्हेन शी रिमूव्ड द अबाया स्लीव, आई कुड सी दैट हर हैंड वाज सो दिस पार्ट वाज सो थिक, इट वाज स्वोलन, और उनकी फिंगर्स भी मोटी हुई थी. एंड शी सेड अब तो मुझसे आई कांट इवन कट वेजिटेबल्स, मैं प्याज भी नहीं काट पाती हूँ. सो
ये वाली जो चीज है ना, इन चीजों की वजह से आप सैडनेस में और डिप्रेशन में चले जाते हो। और जब आप सैडनेस और डिप्रेशन में जाते हो तो आप यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, आप अकेले रहना चाहते हो, आपको लोनलीनेस की फीलिंग आती है। फिर एक एक पेशेंट को बहुत गिल्टी फील होता है। गिल्ट क्यों फील होता है? हमें हमेशा से बचपन से हमारे कल्चर में एक ये चीज हमें सिखाई गई है कि देखो तुम जो करोगे ना वो तुम्हारे आगे आएगा, टाइप ऑफ थिंग, राइट? सो यू लाइक ओ माय गॉड, मैंने जरूर किसी के साथ कोई ज्यादती की होगी, तभी मुझे कैंसर हो गया, राइट? एंड यू नो बट व्हेन यू लुक एट स्मॉल चिल्ड्रन जिनको कैंसर है, उन्होंने किसके साथ ज्यादती की है, राइट? सो ये मल्टीपल फीलिंग्स हैं जो हमारी हो जाती हैं once we find out that we have cancer. So all of these feelings, all of these emotions, ये सारे जो ट्रॉमास हैं हमारे, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और जब आप किसी पेशेंट से या कैंसर सर्वाइवर से आप बात करें ना और आप उसको बोलें यार देखो ठीक है सर्जरी हो गई, यू हैड अ ब्रेस्ट रिमूव, कीमोथेरेपी हो गई, तुम्हारे बाल गिर गए, व्हाटएवर, बट यार जिंदगी तो है ना। I think this is, in my experience and my research, this is the worst thing that we can go and tell them right now at this point in time, ठीक है? याद रखें उनके लिए कोई चीज नॉर्मल नहीं रही है, आप और मैं नॉर्मल है, उनके लिए कोई चीज नॉर्मल नहीं रही है। वो उनको लगता है वो हर चीज से कट गए, दुनिया से कट गए। क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया नॉर्मल है, वो कैंसर डायग्नोस होके बैठे में, तो उनके लिए कोई चीज भी अब नॉर्मल नहीं है। तो उनको ये समझाना कि यार ये पेन बर्दाश्त कर लो, जिंदगी से ज्यादा तो ये पेन नहीं है। दैट इज दैट इज ट्रेजिक इफ वी टॉक टू देम अबाउट इट। वो इस तरह नहीं सोच रहे, वो ये सोचते हैं कि यार मर जाए, मरने में क्या होगा, हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हमारे घर वाले जो हमारी वजह से परेशान है वो परेशान होने छोड़ देंगे, मैं हर वक्त जो वॉमिटिंग कर रही होती हूँ मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते बिकॉज आई कीप वॉमिटिंग ऑल द टाइम, राइट? सो इतना ज्यादा फिजिकल के साथ साथ एक ये जो स्ट्रेस है ना, प्लस दीज पीपल ये बहुत अपने आप को, और अब हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे अपने घरों में भी होता है, सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, कोई और भी अगर बीमार हो कुछ हो, हम उसको कहते ओहो हो तुम प्लीज रेस्ट कर लो, प्लीज लाई डाउन, हैव अ लिटिल ऑरेंज जूस। वी try to do what we think is the best for them, we don't ask them what they think is the best for them, right? उनको अगर हम घर की छोटे मोटे कामों से अलग रखते हैं तो उनको फील होता है कि हम बहुत यूजलेस हो गए, एंड दे डोंट वांट दैट टू हैपन, दे वांट टू फील यूजफुल। हमने हम खुद एज फैमिलीज फ्रेंड्स व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ, उनकी जो मेंटल वेलनेस की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है, जो हम केयर गिवर्स होते हैं। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड नर्सिंग केयर। आपके मेजर केयर गिवर्स आपके डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, ये प्रोफेशनल और कमर्शियल होते हैं, ओके? जो लोग इमोशनली आपके केयर गिवर्स होते हैं वो आपकी फैमिलीज होती हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स होते हैं। दे आर द वंस जिनके ऊपर आप पूरा के पूरा आप ट्रस्ट करते हो, जिनके जिनके साथ आपको ये फील होता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेजेडी या होल ड्रामा, एंड दे आर द वंस जो आपको, they are with you throughout that journey of stress, right? So because of all of these situations, um, of this mental blocks that these patients have, and I don't blame them at all, इनकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। और जब रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है तो वो दूसरी कंडीशंस बहुत उसके साथ क्रिएट होती हैं, ठीक है? सो स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बहुत ही ज्यादा जो ट्रॉमेटिक एक सिचुएशन जो लॉन्ग टर्म ज्यादा होती है। सर्जरी वन टाइम होती है, रेडिएशन 15 से 20 शॉट्स लगते हैं ईच डे, वो खत्म हो जाते हैं। कीमोथेरेपीज यूजुअली लॉन्गर पीरियड्स के लिए होती हैं, कीमोथेरेपी साइकिल्स होते हैं, आईवीज के थ्रू आपको ड्रग्स दिए जाते हैं, वो लॉन्गर टर्म होता है। तो दैट्स द रीजन आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट सेपरेटली। और कीमोथेरेपी ही के सबसे ज्यादा असर होते हैं। सो कीमोथेरेपी इज can go on depending on the patient's will to recover, depending on the health of the patient. कीमोथेरेपी 6 साइकिल, 7 साइकिल, 8 साइकिल, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चल सकती है। अब वो 5, 6,
8 महीने बहुत ही चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल होते हैं, पेशेंट के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी, ठीक है। कीमोथेरेपी की वजह से आई टोल्ड यू द पेशेंट, फीमेल पेशेंट का सबसे बड़ा लॉस इज द हेयर लॉस. You go totally bald. There's no hair anymore, right? फटीक बहुत सेट इन हो जाता है, यू गेट टायर्ड, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. अच्छा, उन ड्रग्स की वजह से मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं. मूड स्विंग सिर्फ इस वजह से नहीं होते हैं कि उन ड्रग्स का असर होता है, हमारी अपनी एज अ पेशेंट एक मेंटल कंडीशन भी होती है. अ वुमन इज जस्ट लॉस्ट अ ब्रेस्ट, she's lost her hair, she feels she looks ugly. So mood swings होने बहुत नॉर्मल है पेशेंट के साथ, ठीक है. Weight changes. A lot of people now, this is a myth that you lose weight, you can also gain weight. Okay, so weight change होता है. If you lose weight, um, obviously बहुत chances होते हैं, but there are some people who will also gain weight, right? Because of chemotherapy, water retention भी हो जाता है, तो bloating और swelling और ये सब भी हो सकती है, right? Because chemotherapy इसलिए दी जाती है where a doctor is not very sure that the cancer cell has not gone in the bloodstream. और तो अगर तो एक ही जगह पे कैंसर सेल आपका है तो लोकलाइज हो गए, सर्जरी और रेडिएशन से खत्म हो जाता है. बट अगर आप मेस्टासाइज का वर्ड यूज करते हैं डॉक्टर्स कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर सेल्स हैं तो आपको कीमोथेरेपी दी जाती है. तो कीमोथेरेपी के अंदर इट स्टार्ट्स किलिंग नॉट जस्ट कैंसर सेल्स, इट स्टार्ट किलिंग सम लॉट ऑफ अदर सेल्स आल्सो, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है. जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो आप ब्रूजिंग बहुत जल्दी आपको हो जाती है, और अगर कहीं भी कट लगे कुछ हो तो ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, वो होनी शुरू हो जाती है आपको, ठीक है. अगर इम्यूनिटी लो होती है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो अगर किसी पेशेंट को लेट्स से विंटर्स के दिनों में कीमोथेरेपी हो रही है और विंटर्स के वो डेज हैं जबकि फ्लू भी बहुत हो रहा होता है, तो अगर आप ऐसे किसी पेशेंट के करीब जाके खांसेंगे भी तो उस बेचारे को फ्लू हो जाएगा, टाइप ऑफ उस बेचारी को फ्लू हो जाएगा. इन्फेक्शन आपका बहुत वल्नरेबल होते हो, सो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. सेकेंडली, पेशेंट्स आर लाइंग डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम, बेड सोर्स के चांसेस भी हो जाते हैं. सो ये कीमोथेरेपी के नेगेटिव हैं, ठीक है. स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और your mind's getting foggy, not just because of the medicines, but because of your mental state also, right? It takes you time processing information. आप अगर let's say you're sitting with your kid and doing some math assignment या English या कोई भी उसके साथ काम करा रहे हैं, तो उसके होमवर्क में पहले आप क्विकर कर लिया करते थे, अब it takes you time processing all that information, right? ठीक है. Vomiting or diarrhea, very very common to have vomiting and diarrhea. Chemotherapy के बहुत ही common वो होते हैं. A lot of women that I met who were undergoing these treatments, and I asked them about alternative medicine कि जी करवाते हैं कुछ. तो एक उनमें बहुत there was this principal of a public college, very nice very nice educated person and very aware, very conscious कि उनके साथ क्या हो रहा था. तो she said हाँ मैं जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ. सो आई सेड आप ये एलोपैथिक नहीं लेती हैं? सो शी सेड नहीं, मैं एलोपैथिक भी लेती हूँ, बट मैं होम्योपैथिक इसलिए लेती हूँ कि मेरी जो वॉमिटिंग है होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से मेरी वॉमिटिंग और डायरिया पे बहुत फर्क पड़ा है, ठीक है. आई डोंट नो इफ दैट वाज ट्रू और नॉट ट्रू, बट शी फेल्ट दैट वे एंड शी सेड कि उस मेडिसिन से मुझे ये बहुत फर्क पड़ता है कि मेरी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के वो थोड़े से कम हो जाते हैं. फॉर मैरिड वुमेन the support of their spouse is very very important. I was doing this session with artistic fabric mills last week, and one of the participants वो अपना example share कर रही थी. उनकी खाला थी, was just 26 years old, और उनकी love marriage हुई थी, और 6 months into the marriage she was diagnosed with breast cancer, and unfortunately the husband left her. He brought her over to the mother's place and said, I'm sorry, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता, आप प्लीज आपकी बेटी अब आपके पास. He passed away. It was a later stage cancer, but the participant was telling me कि उसको वो जो उनकी जो खाला, very young खाला,
सर उस खाला को जो सदमा, बीमारी से ज्यादा इस चीज का सदमा लगा कि जिससे मैंने मोहब्बत करके शादी की है, दिस इज व्हाट ही हैज डन टू मी. सो ये द सपोर्ट ऑफ द स्पाउस, yes, it is also, like I said, men emotionally are not very expressive, and how sometimes they'll be in denial, कि नहीं, you're fine, nothing's happened to you. But you know, a woman and a man with their physical relationship also, spouse में जो relationship होती है, now they're both afraid to continue on that physical relationship because हमें ये भी feel होता है कि cancer patients cancer might be contagious. ऐसी कोई बात नहीं, cancer बिल्कुल contagious नहीं होता है, right? So a husband and a wife may have this distance because she's lost her hair, she's lost her breast, she's puking, she has diarrhea, she's tired, लेटी हुई होती है most of the time, या बात नहीं कर रही है, सोने जागने के टाइम उनके awkward हो गए. So ये चीजें relationship में भी gap ले आती हैं, और इस gap की वजह से you start being unsure कि जी will I be able to carry on my married life or not. तो ये between all of the treatments ये चीजें होती हैं. एक और खातून थे जिनसे मैं बात कर रही थी, एंड शी सेड कि यू नो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन जब से मुझे कैंसर हुआ और मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है, माई किड्स डोंट सीम टू कनेक्ट विद मी एनी मोर. कहती है मुझे इतनी सपोर्ट चाहिए होती है कि मेरे बच्चे उसी तरह मेरे साथ बिहेव करें, मुझे हक करें, बट मेरे बच्चे डरना शुरू हो गए कि जी अगर हम अपनी माँ को आगे प्यार करेंगे या हक करेंगे तो उसको कहीं हम उसको चोट तो नहीं लग जाएगी, वो पेन में तो नहीं आ जाएगी, एंड उसकी बोन्स वीक हो गई हैं. बच्चों ने अपने तौर पे पढ़ लिया होगा कैंसर एंड यू नो कैंसर के मेडिकेशन के रिपरकशन से whatever. तो उसकी वजह से वो बच्चे भी थोड़े से हेजिटेंट हो गए थे, एंड दे वर लाइक यू नो दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल बीइंग क्लोज टू देयर मदर. सो वो एक मदर के लिए जी के एक तो ये कि जी फिजिकल रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ इज not on that same track as it was, और अब बच्चे भी उससे दूर होने शुरू हो गए, राइट? सो उसके तो यू सी, apart from getting a treatment and getting the best doctor and getting the best nurses, अगर ये वाली सपोर्ट आपके पास नहीं है ना, तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप शायद कैंसर से तो रिकवर कर जाओगे, आप एक मेंटल डिजास्टर में चले जाते हो, एंड दैट इज सो अनहेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम. For a long time, normalcy to return to a patient. So these are all the thoughts. These are all the thoughts जो मैंने अभी सारी बातें की. These just sum up in these 5 clouds, right? सही है, मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, पैसे भी कहीं से निकाल रहे हैं, घर वाले भी निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल रही हूँ. Will the cancer come back? This is the biggest question. Like I gave you an example. So if there was cancer in the left breast, and the surgery has been done, can it come back in the right breast? And if it's not in the breast, kahin aur ho sakta hai mujhe cancer. Will I be able to go to work? If I was a working woman and I have been away from my work for a while, will I be able to go back to work? अगर आप सरकारी इदारे में हैं या अगर आप उस तरह के इदारों में where the management is nice enough to understand the challenges that a patient is undergoing while having cancer, they will give you time off. But I am not sure as a patient कि time off होने के बाद भी, am I actually, I don't have a breast, I've lost my hair, I will have to cover my head. Do I want to go back to work in that condition? Will I be able to take care of my family, my kids? They do not think of me as a normal mom anymore. My husband is away from me. My in-laws and my parents all feel I'm weak, I'm fragile, और मैं शायद घर के काम और बाहर के कामों में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ. So will I still be useful for my family? Will I be able to pay my medical bills? Like I gave you an example, the longer I live, the poorer I will get अगर इंश्योरेंस कवर नहीं है. और इंश्योरेंस का भी मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, इंश्योरेंस भी एक लेवल तक कवर करती है. उसके बाद क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, इंश्योरेंस के साथ आपको अपनी
सेविंग्स भी पुल अप करनी शुरू कर देनी पड़ती हैं. And then how will this affect my marriage or my relationship? So how is my spouse going to look at all of this? Will he still love me? Uh, I was talking to another woman, and I asked her how was the support from the spouse, and she said कि वो तो पहले भी जो है घर आके ऑफिस से आके चाय पीते थे, टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, खाना वाना खा के सो जाते थे, तो कोई बहुत ज्यादा बस ऐसी जैसे नॉर्मल लाइफ उनके लिए वो नॉर्मल था, राइट? तो मैंने कहा क्या वो अभी भी यही रूटीन फॉलो करते हैं? तो कहते हैं हाँ वो अभी भी यही रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है वो दूसरी शादी कर लेंगे. सो आई एम लाइक कि अगर उसने यही सब कुछ करना है जो वो आपके साथ कर रहा था कैंसर होने से पहले, तो वो दूसरी शादी करके क्या करेगा? कहती है नहीं, आप ये समझे ना कि कुछ भी है, लेकिन कहीं अगर बाहर जाना हो, कुछ हो, तो एक खूबसूरत या एक लड़की तो साथ चाहिए होती है ना, जो साथ जाए तो उसको अच्छा तो लगे. मेरे साथ अब वो कहाँ कहीं बाहर जा सकेगा, और आप यकीन माने मेरा तो दिल भी नहीं करता है बाहर जाने, यू नो. सो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स जो उनके जहन में बातें आती हैं. एंड नाउ एज केयर गिवर्स, तो ये तो एक क्रक्स था. दिस इज ऑल द फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड ऑल दैट थिंक अबाउट. एज केयर गिवर्स हमारा रोल क्या हो सकता? सो केयर गिवर्स क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो केयर गिवर्स कर सकते हैं ना, केयर गिवर्स कैन गिव स्माइल्स. पाकिस्तान के कल्चर में लोग स्माइल नहीं करते बाय द वे, और अगर कोई स्ट्रेंजर आपको स्माइल करे तो आप टोटली इग्नोर करके पीछे देखते हो कि शायद पीछे वाले को स्माइल किया होगा, इट वाज़न्ट प्रोबेबली फॉर मी, राइट? सो कैंसर पेशेंट स्माइल करना भूल जाते हैं, ओके? अगर वो भूल जाते हैं तो हमारा काम है उनको स्माइल करवाना. if you are a sister, if you're a friend, maybe even a spouse, tell them a joke जो किसी जमाने में आप लोगों ने शेयर किया होगा. या अगर आप भाई बहन हैं तो बचपन में जो आपने शरारतें की होंगी, अपने पेरेंट्स को तंग किया होगा, टीचर्स के साथ, या बहुत बचपन में मुझे याद है हमारी जो शरारतें होती थी ना, वो हमारे कारी साहब के साथ होती थी. हम सब चोर होते थे कुरान शरीफ पढ़ने के ना, तो जो कारी साहब के साथ हम लोग हरकतें करते थे ना, आज भी हम भाई बहन वो याद करके हंसते हैं. सो दीज आर jokes that you share with them, उनको याद दिलाएं and make them smile. If they don't have a smile, give them a smile. They need love. Like I said, बहुत सारे लोग समझते हैं कैंसर कंटेजियस है, and we are scared of touching or hugging the person. ऐसी कोई चीज नहीं है. Please go ahead, touch them and hug them. They like it. हर दफा हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जी वी लव यू, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. Maybe it's your child who says that to you every day, I love you mom, but not everybody will be able to do it every day. आप छोटी छोटी चीजों से शो करते हैं आप किसी से कितना प्यार करते हैं. अगर आप डेली मिलने नहीं किसी से जा सकते, टेक्स्ट मैसेज भेजें, व्हाट्सएप करें, जोक भेज दें, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है. याद रखें ये डिप्रेशन में है, सैड है, लोनलीनेस में कटे हुए हैं दुनिया से. मे बी शी इज अ co-worker and she needs to get back. She feels she's not connected to work anymore. Tell her what's happening at work life. Gossip सुनाए उसको work life की. अब बता दें who's dating who at the office. या annual reports आ रहे हैं, और these are the type of profits जो हमने बनाए हैं. या अगर वो काम नहीं करती हैं and she's like someone who stays at home, just tell her ke how pretty she looks in this blue color, kitna unko suit kar raha hai if she's wearing something blue, right? Take a flower for her. And mujhe yaad hai after I had a heart attack some time back, और मैं मेरी बहुत ही फजूल eating habits होती थी. So my friends who would come to see me, they would get nuts and fruits, and I'm like, are you guys crazy? Nuts or fruits क्यों आ रहे हैं? So it's like these are healthy eating habits, those are the ones we are developing in you. और फूल तुम क्या करोगी? फूल तुम वेस्ट में रखोगे, एक हफ्ते के लिए उठा के भेज दो, ये एटलीस्ट तुम्हारी हेल्थ की तरफ जो है तुम्हें प्रोपोगेट करेंगे, तो ये एक
बिहेवियर चेंज की तरफ भी आपको लेके जाता है कि इफ यू नो आई वाज नॉट अ फ्रूट ईटर, सो आई गॉट इनटू ईटिंग फ्रूट्स दैट वे, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यू नो एक्सप्रेसेस लव, या उसको बताएं आजकल लेटेस्ट यूट्यूब पे कौन सी म्यूजिक चल रही है, इफ शी इज इनटू म्यूजिक, राइट? एंड इफ शी इज इनटू इबादत एंड इफ शी वांट्स टू मेडिटेट, आप यू नो टेल हर अबाउट दी स्मॉल दुआस, या कोई ऐसी बुक, वो जो दुआओं की किताबें होती हैं, या दुआओं के जो किरत के आपके वीडियोस होते हैं या ऑडियोज होते हैं, गेट हर इनटू दैट, राइट? एंड देन एम्पैथी, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं केयर गिवर के अंदर होना. हम ये, इफ आई एम अ कैंसर पेशेंट, obviously I'm sure the other person doesn't know what I'm going through. I'm the one who's lost a breast. I'm the one who's lost my hair. I'm the one who's throwing up all the time. कुछ खाने का दिल नहीं करता है. Okay. जब मेरी फ्रेंड या मेरी कुलीग या मेरी बहन या इवन माय मदर या माय मदर इन लॉ, भाभी, नंद, whoever is my caregiver, my brother, my husband, the moment they understand मैं किन फीलिंग से गुजर रही हूँ और वो इन फीलिंग से गुजर सकते हैं, that is the only time they will understand what I need as a patient, what support I need as a patient, right? अगर एक कैंसर पेशेंट मुझसे बात करके अपनी कोई बात मुझे बताना चाह रहे हैं, राइट, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट देम, आई वांट टू लिसन टू देम. मुझे उनकी पूरी बात सुननी है. मुझे आई वांट टू हियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. सही नहीं होंगे वो, नाराज हैं, दुखी हैं, गुस्से में, दे माइट बी सेइंग अ लॉट ऑफ शिट. लिसन टू देम. ओके, उनके पास बात करने के लिए बहुत लोग नहीं है. एवरीवन हैज अ लाइफ. लाइफ बहुत फास्ट मूव कर रही है आजकल. हर एक के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, अपनी टाइमलाइंस हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं. ओके, सो मैं अगर टाइम निकाल के आ रही हूँ एक कैंसर पेशेंट से मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इट इज माई ड्यूटी टू लिसन टू देम. इट्स नॉट अबाउट मी. मेरा ईगो नहीं है. मैं ये नहीं हो सकता कि यार जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क और मुझे इनसे ज्यादा बेहतर पता है, डजंट मीन आई नीड टू इम्पोज दैट. प्लीज, मैं एक केयर गिवर हूँ, मैं किसी का ख्याल कर रही हूँ, मैं उससे मिलने गई हूँ. केयर गिवर बाय द वे एक परमानेंट पोजीशन नहीं होती. एनीबडी कैन बी अ केयर गिवर एट एनी पॉइंट इन टाइम, राइट? जो केयर परमानेंटली देते हैं, लाइक आई सेड, नर्सिंग केयर के साथ साथ आपके घर में जो आपका ख्याल करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स, जो कलीग्स आपसे मिलने आते हैं, वो भी केयर गिवर्स होते हैं फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम. सो इट्स नॉट अबाउट, there's no competition in caregiving, ठीक है? And it's not about me and it's not about her. हमारे बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है. ओके, एक कैंसर पेशेंट अगर कोई बात कर रही है, कर रहा है, हमें उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? वी आर नॉट इन कंपटीशन. हम बिल्कुल किसी किस्म की ईगो में नहीं पड़ सकते उस चीज के साथ. देन देयर इज प्रैक्टिकल हेल्प. ओके, प्रैक्टिकल हेल्प क्या होती है? सो आई गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस एंड आई से, ओ वाओ, 4:30 बज रहे हैं, तुम्हारे बच्चे आ गए ट्यूशन पे से या स्कूल पे से आ गए? हाँ, चलो मैं इनका होमवर्क करवा देती हूँ. आई सिट विद हर चिल्ड्रन एंड हेल्प टू द होमवर्क. या आई एम लाइक, ओ माय गॉड, आई नो तुम्हें अलमारी साफ करने का कितना क्रेज था, कितने दिन से तुमने अलमारी नहीं साफ की, लेट मी क्लीन योर अलमारी फॉर यू. और यूल कॉल हर अप एंड से, तुम्हें पता है आज मैंने जो है ना पास्ता बनाया है, एंड आई नो यू लव पास्ता, मैं लेके आ रही हूँ. These are practical helps, you know. आप उससे पूछें कि ओ अच्छा तुम आज जा रही हो कीमोथेरेपी के लिए, लेट्स से द कीमोथेरेपी इज नॉट इन पेशेंट ओपीडी में होनी है, 2 घंटे के लिए जब आपको ड्रग्स देंगे, यू लाइक, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ. तो दवाइयाँ, अच्छा गिव मी अ लिस्ट, तुम्हें फलानी मेडिसिन चाहिए, उधर नहीं मिल रही है, आई विल गो एंड गेट इट. ऑफिस से वापसी में वो फार्मेसी रास्ते में पड़ती है, मैं उठा लेती हूँ. तुम्हारे ये लॉन्ड्री में कपड़े जाने हैं, मुझे दे दो, आई विल ड्रॉप इट टू द लॉन्ड्री, और वापसी में आई कैन पिक इट अप अगले हफ्ते अगर मैं आती हूँ, या यू कैन सेंड समवन टू पिक इट अप. यू नो, प्रैक्टिकल हेल्प करें उनके साथ. और इस प्रैक्टिकल हेल्प में डू नॉट आस्क देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. रिमेंबर, वो खुद अपनी एक स्ट्रगल से गुजर रही हैं. आप उनको क्वेश्चंस और ऑप्शंस देके उनको मजीद पागल नहीं कर. यार मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते तुम्हारे लिए बिरयानी पका के ले आऊं. वो अगले हफ्ते तक नहीं सोच रही है, वो अगले 2 दिन का सोच रही है मैक्स. ओके,
सो प्लीज उसको और ऑप्शंस मत दें, ऑप्शन सिर्फ ये दे दें, यार आज मैं पास्ता भी बना रही हूँ और आज मैं थोड़े से कोफ्ते बना रही हूँ, व्हाट वुड यू लाइक, कोफ्ते खाओगे या पास्ता खाओगे, यू नो, आज प्लस 2 ऑप्शंस शी कैन वर्क ऑन, राइट? Do not put her into mental gymnastics. Please, she doesn't deserve that. Okay? Keep positive. लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी आपसे जिक्र किया कि पॉजिटिव होने में हम we cannot ignore the fact that they are not going through normalcy. Do not expect them to be sane and intelligent and clever and normal all the time. They're not. Okay? तो पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हुए उस चीज को, एम्पैथी को साथ में लाएं इसके, ठीक है? बी पॉजिटिव, आप यू नो टेल देम अबाउट अ स्टोरी, लाइक अभी किरण ने जैसे जब सेशन स्टार्ट हुआ नादिया जमील का जिक्र किया, राइट? इंस्टाग्राम पे नादिया जमील की पिक्चर्स थी या व्हाटएवर, राइट? इस तरह टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, राइट? एंड यू नो एग्जांपल्स लाइक यू नो व्हाट, तुम्हारा जो ऑफिस डेस्क है वो बिल्कुल तुम्हारे जाने के बाद वीरान हो गया है। आई लुक एट इट एवरी डे और मैं कहती हूँ द मोमेंट यू कम इन वी गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, द फर्स्ट थिंग वी विल डू, हम पिज्जा खाएंगे बाहर जाके। ओके, इस तरह की पॉजिटिविटी, प्लीज मेंटेन दैट पॉजिटिविटी अराउंड देम। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ये देख नहीं सकते कि अगले पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है। ओके, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, सो इफ यू आर अराउंड अ पर्सन लाइक दैट जिसको वॉमिटिंग हो रही है, या तो आप डिसाइड कर लें कि आपने जाना ही नहीं, आपने फोन पे कांटेक्ट रखना है, आपने व्हाट्सएप वीडियोस पे कांटेक्ट रखना है या व्हाटएवर, बट इफ यू आर देयर, अपना दिल बड़ा करके वहां पे बैठे। दिस पर्सन माइट रश टू द बाथरूम टू प्यूक, ओके, यू डोंट हैव टू रन अराउंड आफ्टर हर, बट प्लीज इस तरह का रिएक्शन ना दें जिससे उसको मजीद गिल्टी या उसको अपना आप बुरा लगना शुरू हो जाए। Communicate with your friend. They need a lot of they need someone to talk to.